Good morning to everyone. This is the sum we will do in today's lecture. Josh Limited and Ashish Limited were amalgamated on from 1st April 2017. So this is a sum of pure amalgamation where Josh Limited and Ashish Limited is getting merged, getting amalgamated. A new company, and the third company is formed, which is Shilpa Limited, to take over the business of Josh Limited and Ashish Limited. Summary balance sheet as on 31st March 2017. We have equity shares of 100 rupees fully paid. So 4 lakh divide by 100, you get 4,000 shares. Ashish Limited mein we have 3,75,000. Share capital divide by 100, you get 3750 shares. 12% preference shares of rupees 100 is fully paid. We have 1,50,000 and 1 lakh. 100 share, one share is of 100 rupees. So 1,50,000 divide by 100, you get 1,500. And Ashish Limited mein there is 1 lakh preference shares. When you divide by 100, you get the numbers. It is 1,000 shares. There is general reserve, profit and loss account, and statutory reserve. 10% debentures of 100 each, 30,000, 1,500. Then sundry creditors are there, 1,10,000, 70,000. Then we have bills payable. In the asset side, there is land and building, plant and machinery, computer, stock, debtor, bill receivable, and bank balance. In the additional information, Shilpa Limited issued 5 equity shares for each equity share of Josh Limited and 4 shares for each equity share of Ashish Limited. So Shilpa Limited has, that is the new company, purchasing company, has issued 5 equity share for each share of Josh Limited. So एक Josh Limited में एक शेयर के लिए 5 equity shares मिलेगा for 1 share. Shilpa Limited will issue, for each share of Josh Limited, Shilpa Limited will be issuing 5 equity shares. For 1 share, 5 equity shares. Now total Josh Limited mein there are 4,000 shares. 4 lakh divided by 100. So how many equity shares will be issued? We'll have to do a cross multiplication. See, for 1 share, 5 shares will be given by Shilpa Limited. In Josh Limited, there are 4,000 shares. We will do a cross multiplication. We will get the total shares issued by Shilpa Limited. Then in Ashish Limited, 4 equity shares for 1 share in Ashish Limited. So एक शेयर के लिए 4 equity shares मिलेगा Ashish Limited में. So Ashish Limited में 3,750 equity shares at total. When we do a cross multiplication, we will get the number of shares. The shares are of rupees 10 each, issued at rupees 30. 10 rupees का share है, but issue price है 30, means above the face value, 1 share is of 10, but will be issued at 30, means more 20 rupees more than the face value. So we will say that shares are issued at premium more than the face value. Preference shareholders of both the companies are issued equivalent number of 15% preference shares of new company at rupees 150 per share, and face value is 100. See, face value is 100, but shares are issued at 150. So 50 rupees extra is the premium. So number of shares same रहेगा, divide by 100 करो, 1500 and 1000. Multiply by 150 करेंगे because number of shares will remain the same, but here in old company it was 12% preference shares. In the new company it will be 15% preference shares. Rate of dividend is increased
and 100 rupees shares will be issued at 150 per share. So we will get the purchase consideration. See, purchase consideration is paid to the owners who are the shareholder. Shareholder of two types, preference and equity. So दोनों को purchase consideration मिलेगा. जब उनको क्या मिलने वाला है उसको हम calculate करके add करेंगे, then we will get the total amount of purchase consideration. 10% debenture holder of Josh Limited and Ashish Limited are discharged by Shilpa Limited, issuing such number of its 15% debentures of ₹100 each, so as to maintain the same amount of interest. This is very important point. Pay attention, everyone. देखो 10% डिबेंचर होल्डर्स को शिल्पा लिमिटेड में 15% डिबेंचर्स मिलेगा 100 रुपीज का. बट यहाँ पे हमें क्या मेंटेन करना है? जितना पहले 10% पे इंटरेस्ट मिलता था, अभी 15% में भी सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. तो कितना डिबेंचर्स का अमाउंट रहेगा, इशू करना पड़ेगा, दैट वी विल हैव टू फाइंड आउट. सो 10%, 30,000 का 10%, सी डिबेंचर्स इन जोश लिमिटेड इज 30,000, उस पे 10% का इंटरेस्ट मिला. 30,000 का 10% विल बी 3,000. सो व्हेन 15% डिबेंचर्स आर इशूड, वो टाइम पे भी इंटरेस्ट अमाउंट विल रिमेन द सेम, दैट इज 3,000. सो कितना, अगर 3,000 ये 15% इंटरेस्ट है, तो टोटल 100% वैल्यू कितना होगा, वो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड आउट करेंगे. That I will show you again when we will be doing the sum, where we will do the working of this. And then Shilpa Limited revalued following assets taken over from Josh Limited and Ashish Limited: land and building, plant and machinery, computer, stock, data. New values are given. Now what they have asked us to prepare, you are required to compute purchase consideration, pass journal entries in the books of Shilpa Limited under purchase method. So we'll have to also have to pass the journal entries, and finally prepare the balance sheet of Shilpa Limited after amalgamation. So let us start the sum now. There are two type of shareholders. So we will have to first find out for equity shareholders. See, amalgamation mein first step will be to calculate purchase consideration. See, this chapter is not new to all of you. You all have done amalgamation of firms in your SYBCom, but this time it is amalgamation of companies, advanced version amalgamation of companies, but the basic remains the same. So every sum of amalgamation, the first point, the first step will be to calculate the purchase consideration. So now purchase consideration is paid to the owners, and in company the owners are shareholders. Shareholder are of two types, equity and preference. So first let us find out purchase consideration paid to equity shareholders. Now there are two company. There is two company who is getting amalgamated into third new company, that is Shilpa Limited. So equity shareholders को they find out करते हैं कितना परचेज कंसिडरेशन रहेगा. क्या बोला गया है? फॉर वन इक्विटी शेयर, आई राइट शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ. वन इक्विटी शेयर के लिए क्या मिलने वाला है? वन इक्विटी शेयर के लिए फर्स्ट लेटर सी जोश लिमिटेड का देखते हैं. वन जोश लिमिटेड का एक शेयर के लिए 5 इक्विटी शेयर मिलेगा शिल्पा लिमिटेड में, तो 5 इक्विटी शेयर, वन इक्विटी शेयर के लिए 5 इक्विटी शेयर. फॉर वन शेयर of Josh Limited, 5 equity shares of Shilpa Limited will be issued. So we will see total number of shares कितना है Josh Limited में. So 4 lakh divided by 100, we get 4,000 shares. So we will write here 4,000 shares.
So then we will do the cross multiplication. तो यहाँ पे 4,000 इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा? डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट द आंसर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? 4,000 into 5 divide by 1. So how much you will get? How much number of shares you will get? You will get 4,000 into 5 divide by 1. हमें मिलता है 20,000 equity shares of rupees 10 each. एक शेयर 10 का होने वाला इन द न्यू कंपनी, issued at rupees 30, issued at rupees 30 each, given in the question. If you will look into the question, we have already discussed the shares are of rupees 10 each, issued at rupees 30 each. So 20,000 equity shares of rupees 10 each, issued at 30. 20 rupees is the premium. Multiply karo 20,000 into 30, you will get 6 lakhs. You will get 6 lakhs. Multiply karo 20,000 into 30, you will get equity shareholders will get 6 lakh as purchase consideration. Now let us find out for Ashish Limited. Ashish Limited के बारे में क्या बोला है कि 4 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ आशीष लिमिटेड. एक इक्विटी शेयर के लिए कितना मिलेगा? 4 इक्विटी शेयर मिलेगा. सो लेट अस राइट फॉर 1 इक्विटी शेयर हाउ मच? फॉर 1 इक्विटी शेयर 4 इक्विटी शेयर्स मिलेगा. 4 इक्विटी शेयर. So total number of shares कितना है? We don't know कितना total मिलेगा, but we know आशीष लिमिटेड में कितना shares है? 3,75,000. 1 share of 100. So divide करेंगे तो number of shares हो जाएगा 3750. So यहाँ पे लिखेंगे 3750 shares के लिए कितना मिलना चाहिए? Total 37 equity शेयर्स के लिए डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना मिलेगा? सो वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3750 into 4 डिवाइड बाय 1. सो हमें मिलता है कितना? वी गेट 15,000. एवरीवन गेटिंग दिस आंसर? 15,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each. The face value, the printed value of each share is 10 rupees. The issue value is 30 rupees. Issued at rupees 30 each. So 15,000 into 30, how much you get? Cross multiply karo 15,000 into 30. How much you are getting? 4,50,000. ये 30 किधर से आया? ये 30 यहाँ पे दिया हुआ है. The shares of rupees 10 each issued at rupees 30. Given in the question, at what price Shilpa Limited will be issuing that share? It is given that that one share will be of 10 rupees and the issue price will be 30. So premium of 20 rupees, right? So we will get here 4,50,000. यहाँ पे 6 lakh कैसे आया? 20,000 into 30. Later on you should not be thinking कि ये आया कहाँ से? Amounts I have written it here. कैसे आया? Now we will find out equity shareholders का हो गया. Now we will find out for preference shareholders. For preference share, so PC is paid to the owners. The owners in company are shareholders, and shareholders are of two types: equity and preference. Equity का कर लिया, अभी preference का देखते हैं. See, preference ka directly they have given in the question that preference shareholders of both the companies are issued equivalent number, means equal numbers as
they had in the old company, but rate of interest will be, rate of dividend, because shares get dividend, rate of dividend will be 15%. So earlier it was 12% in old companies. In the new company, it will be 15% preference shares of new company at rupees 150 per share. Face value is 100. And issue value is 150. So 100 rupees का शेयर है, 50 rupees extra में issue करेंगे, तो 50 rupees is the premium. Above the face value is the issue price, above the face value is premium, issue price below the face value is discount. So यहाँ पे 150 है. चलो इक्वल नंबर, मतलब पहले कितना नंबर था, 1,50,000 डिवाइड बाय 100, 1,500 इन जोश लिमिटेड, एंड आशीष लिमिटेड में 1 लाख था, डिवाइड बाय 100, एक शेयर 100 का है, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाते 1000. तो पहले 1,500 एंड 1000 था, तो अभी भी उतना ही रहेगा, बिकॉज इन क्वेश्चन दे हैव टोल्ड इक्विवेलेंट नंबर, इक्वल नंबर as it was in the old company. So new company maybe it will be the same numbers. So let us come here. Preference share पहले जोश लिमिटेड का करते हैं. First let us find out for Josh Limited कितना था, 1,50,000 divide by 100. So it will be the same numbers, 1,500 preference shares. But how much percent? क्या मिलने वाला है? 15% preferentials मिलने वाला है. 15% preferentials in place of 12% in old company. In the new company, these shareholders will be given 15% preference shares of rupees 100 each, issued at rupees 150. So 1,500 into 150. How much you will get? Take your calci and see how much amount you're getting. 1,500 into 150. How much you're getting? 2,25,000. Check whether you're getting this amount. 2,25,000. And in the other company, that is Ashish Limited, there are 1,000. 1 lakh divided by 100. 1,000. And I will write a comma here. 1,000, 15% preference shares, 15% preference shares of rupees 100, preference shares of rupees 100 each, issued at rupees, how much it is? Issued at rupees 150. So 1,500, now it is 1,000 shares into 150. So you should get how much? 1,50,000 मिल रहा है सबको. 1,000 into 150, 1,50,000. So with this, our purchase consideration is ready. हमें हमारा परचेज कंसिडरेशन मिल गया. तो ऐड करो दोनों कंपनी का टोटल परचेज कंसिडरेशन, टोटल पीसी. You can write short form में purchase consideration as PC. So total PC is how much? Add 6 lakh plus 2,25,000 for Josh Limited. You get 8,25,000. Check whether you're getting that. 8,25,000. Same way, 4,50,000 plus 1,50,000, we are getting 6 lakh. So our first step, what was asked, is done. We have calculated our purchase consideration. Now we go to the next step where they have asked us to pass the journal entries in the books of Shilpa Limited. Shilpa Limited is the purchasing company. It is the new company. So new company ने business purchase किया. So first entry will be of business purchase. Business purchase account debit to liquidators, the ones who are selling their business. Liquidators of, which is the company Josh Limited, and liquidators of Ashish Limited. To liquidators of Ashish Limited. To liquidators of Ashish Limited. So now
What we will write here? कितने में business purchase किया? Here we will write the value of purchase consideration. So purchase consideration का value कितना है? Josh Limited it is 8,25,000. Ashish Limited it is 6 lakh. So add both of them, you will get the total amount. कितना आ रहा है? 14,25,000. 14,25,000. We will write the narration being business purchased. Being business purchased. So this is done. Now we will go to the next entry. Next entry, takeover of assets and liabilities. Takeover of assets and liabilities will be our next entry will be takeover of assets and liabilities. तो इसमें let us write because new revised value is given ना, तो let us see किस किस का revised value दिया है वो हम लोग ले लेते हैं. यहाँ पे we can see ये सब assets का revised value दिया है. So I will copy it from here and I will write here debit. Lionel Building account debit. Plant and machinery account debit. Computers account debit. Stock account debit. Debtors account debit. Revised value is given. So let us write the revised value. हमें अभी क्या करना पड़ेगा? जोश लिमिटेड और आशीष लिमिटेड या तो हम साथ में कर सकते हैं या तो वी हैव टू पास डिफरेंट एंट्रीज. सो क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं या वी कैन ऑल्सो पास अ कंबाइन एंट्री. कंबाइन क्योंकि दोनों का असेट्स, शिल्पा लिमिटेड इज गोइंग टू टेक ओवर बोथ द कंपनीज असेट्स एंड लाइबिलिटीज. सो इफ वी डू अ कंबाइन एंट्री तो हमारा एक एंट्री कम हो जाएगा. से काम करते, लेट अस डू अ कंबाइंड वन. 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख. सो लैंड एंड बिल्डिंग का ऐड करके लिख लेते 6 लाख. सेम वे गिव द आंसर एवरीवन. 1,20,000 plus 1,50,000 will be 2,70,000. So यहाँ पे we will write 2,70,000. Same way, take your be ready with your calci. 70 plus 10, computer 70 plus 10 will be how much? 80,000. Same way, which is the next asset, 1 lakh stock, 1,50,000 plus 80 will be 2,30,000. 2,30,000. And next, which is the asset, debtor 1,10,000 plus 1,90,000 will be 3 lakhs. So we will write here 3 lakhs. अब कौन सा asset बच गया जरा देखते हैं. उसका it will be taken at book value. कोई asset बचा है? Bills receivable है ना? Bills receivable is remaining. Bills receivable is not given and cash bank balance is not given. तो ये दोनों का तो we'll have to take the old value because new value is not given. Right? New value नहीं दिया तो old value ले लेंगे. Let us write here. So bill receivable account debit and bank account debit. Now we will add and write the amounts here. Goodwill that we will get as a balancing figure. Goodwill अभी लिखने के लिए लिखा है. यहाँ पे goodwill है क्या? ओल्ड कंपनी में गुडविल दिया है किधर? एडजस्टमेंट में किधर गुडविल दिया है? Is goodwill given anywhere in the question? If it is not given, then from where we will write the balancing figure? What we get, it may be goodwill or capital reserve. That we have to see which is it, goodwill है या capital reserve है, वो हमें बाद में समझेगा. So यहाँ पे क्या करते हैं? Let us see here. इंडिविजुअली करे तो एक में गुडविल एक में कैपिटल रिजर्व ऐसे भी आ सकता है, बट वी आर डूइंग इट एज कंबाइंड. तो हमें कंबाइंड आएगा, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व. 90 plus 20 is 1,10,000. सो बिल्स रिसीवेबल वी आर गेटिंग 1,10,000. इधर लिखेंगे 1,10,000. एंड बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस है 60 plus 80, 1,40,000.
So we'll write it here, 1,40,000. इसके बाद what we will do, we will go to the credit side. We will not leave any line, वो बाद में देख लेंगे. Let us see what all liabilities are there which will be taken over. So we have here, we'll have to do a working first. देखो शेयर कैपिटल रिजर्व्स तो नहीं आएगा, डिबेंचर है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. सो 10% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. सो यहाँ पे we will write 10% debentures, creditors, bills payable. डिबेंचर्स का न्यू वैल्यू चाहिए, वी वांट द न्यू वैल्यू, बिल्स पेबल, वी वांट द न्यू वैल्यू. डिबेंचर्स का पहले क्रेडिटर्स का इसका लिख लेते हैं, 1,10,000 plus 70 is 1,80,000 and this 1,00,000 plus 25 will be 1,25,000. 1,80,000, 1,25,000. Because revised value is not given, we will write the old value, 1,80,000 and 1,25,000. 1,80,000 and 1,25,000. अभी क्या करते हैं, डिबेंचर का वर्किंग नोट में जाते हैं. लेट अस गो टू द वर्किंग नोट फॉर डिबेंचर्स. सो 10, let us write 10% debentures. 10% debentures कितना अमाउंट है, टोटल एक साथ भी कर सकते हैं बिकॉज हम कंबाइन करने वाले. तो लेट अस ऐड बोथ ऑफ देम, 30 plus 15, 45,000. 10% डिबेंचर्स का वैल्यू कितना है दोनों का मिला के, इट इज 45,000, राइट. 10% it is 45,000. Now they say, let us read that adjustment again. It says 10% debenture holders of Josh Limited and Ashish Limited are discharged by Shilpa Limited, issuing such number of 15% debentures of ₹100 each, so as to maintain the same amount of interest. मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना 10% डिबेंचर होल्डर्स को टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आता था, उतना ही टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 15% डिबेंचर्स में भी आना चाहिए. तो उतना अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इशू करो जितना 10% डिबेंचर होल्डर्स को जितना इंटरेस्ट मिलता था, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इवन 15%, भले रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 10 it has been increased to 15, but the amount of interest should remain the same. So let us first find out the amount of interest. Let us find out the amount of interest for the 10% डिबेंचर्स में कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करते हैं. तो 45,000 पे अगर 10% का इंटरेस्ट देंगे तो कितना इंटरेस्ट होगा, इट विल बी ₹4,500. Getting this, ₹4,500. So now we have to maintain the same amount of interest. 15% में भी हमें सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो अगर ये इंटरेस्ट 4,500, ये 15% इंटरेस्ट है. अगर ये 4,500 15, देखो 10% में जो 4,500 का इंटरेस्ट मिलता था, अभी 15% डिबेंचर में भी when issuing 15% डिबेंचर्स, कभी भी सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए. सो अगर ये 15 है तो हमारा 100% वैल्यू कितना रहेगा, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ 100% मतलब टोटल, देखो आप 100% अमाउंट डालोगे तो आपको 15% का रिटर्न मिलेगा. वो रिटर्न अगर 4,500 है तो 100% वैल्यू कितना रहेगा, तो हमें पता चलेगा हमारा टोटल डिबेंचर का वैल्यू कितना है. तो डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टेक योर कैलसी, 4,500 into 100 डिवाइड बाय 15, आपको कितना मिल रहा है, 30,000. सो यहाँ पे लिखेंगे 30,000.
तो डिबेंचर का अमाउंट क्या रहेगा 30,000 4,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 30,000 विल बी द रुपीज 30,000 will be the amount of 15% debentures. 15% debentures का न्यू वैल्यू कितना रहेगा 30,000. अभी देखो 30,000 का 15% निकालो 30,000 का 15% निकालो यू विल गेट 4,500. वी कैन क्रॉस चेक अवर आंसर. वो लोग ने क्या बोला था कि भले 15% डिबेंचर्स दे रहे बट उनका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जितना 10% में था उतना ही सेम 15% में होना चाहिए. व्हेन यू 30,000 का 15% निकालोगे ना then you will get the answer 4,500. मीन जो पॉइंट उन लोग ने रखा था हमने सेम वे से किया है. सो यहाँ पे नाउ व्हाट वी विल डू न्यू वैल्यू क्या है डिबेंचर्स का न्यू वैल्यू क्या मिला 30,000. देखो ओल्ड वैल्यू क्या था 45,000. न्यू वैल्यू क्या है 30,000. भले उन्होंने क्या उनका अमाउंट कम करवा के लिया है भले दे आर गेटिंग 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये होने के बाद what we will do we will write to business purchase which was in the debit. Now we will cancel it. So debit ka opposite is credit. So business purchase will come in the credit or business purchase में we will write the amount of see here 10 is 10 कम है. So कितना amount है right how much is the amount this 10 कम लिखा था मैंने यहाँ पे तो 14,25,000. नाउ सी क्या आ रहा है डेबिट में डिफरेंस आ रहा है क्या क्रेडिट में फाइंड आउट करो. टेक योर कैलसी सब अमाउंट्स को लिखो 6 लाख प्लस 2,70,000 2,70,000 plus 80,000 plus 2,30,000 plus 3 lakhs plus 1,10,000 plus 1,40,000. तो यहाँ पे आ रहा है 17 लाख. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 17,30,000. अभी क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है 30,000 plus 1,80,000 plus 1,25,000 plus 14,25,000. We are getting 17,60,000. 17,60,000. Now tell me कौन सा साइड का अमाउंट ज्यादा है डेबिट का या क्रेडिट का. डेबिट का टोटल है 17,30,000 और क्रेडिट का टोटल है 17,60,000. सो वी कैन मेक आउट दैट क्या ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है. कितने से ज्यादा है डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में क्रेडिट ज्यादा है 30,000 से. मीन्स हमने 30,000 एक्स्ट्रा पे किया है. जो एक्स्ट्रा पैसा हमने पे किया है इट विल बी फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस गुडविल. So we are getting 30,000 as goodwill. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है. We will write it as balancing figure and the narration will be being assets and liabilities taken over. Assets and liabilities taken over by Shilpa Limited. So now we come to our next entry. That is discharge of PC. We come to our next entry, discharge of PC. So यहाँ पे liquidators, जो हमारा liquidators क्रेडिट में था अब ये डेबिट में आ जाएगा. liquidators of जोश लिमिटेड अलग अलग पास करना है बिकॉज पीसी अलग अलग निकाला है तो वो भी कर सकते हैं बट आई विल पास अ कंबाइन एंट्री अगेन. देखो लिक्विडेटर्स ऑफ जोश लिमिटेड क्रेडिट में था. नाउ वी आर राइटिंग इट ऑन द इन द डेबिट जिससे कि ये कैंसल हो जाएगा. आशीष लिमिटेड अकाउंट
डेबिट टू क्या दिया है, वी हैव गिवन टू इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया है ना, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना है ये 15% और 15% है ना, यस रेफरेंस 15% है, एंड प्रीमियम में इशू किया है, सो प्रीमियम में इशू करते हैं, सो व्हाट विल कम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट. सो लेट अस फाइंड आउट, पीसी में जाते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स, 20 plus 15, 20,000 or 15,000, 20,000 to Josh and 15,000 to Ashish. So 20 plus 15 is 35,000. So equity shares कितना है, 35,000 into 35,000 into 10, एक शेयर 10 रुपीस का है, so it becomes 3,50,000. यहाँ पे लिक्विडेटर्स कितना है, जोश लिमिटेड इज 8,25,000 एंड आशीष लिमिटेड इज 6 lakhs. नाउ इक्विटी शेयर मिल गया, प्रेफरेंस शेयर देखते हैं कितना है, प्रेफरेंस शेयर्स इज 1,500 and 1,000, बट एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीस का है, 1,500 plus 1,000 is 2,500. सो यहाँ पे वी विल राइट 2,500 into 100, one preference share is of 100, so this will become 2,50,000. और प्रीमियम कितना दिया है, प्रीमियम 35,000 शेयर्स पे 20 रुपीस का प्रीमियम प्लस 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स पे 50 रुपीस का प्रीमियम, ये दोनों को ऐड करो, देखो हाउ मच इट इज कमिंग, ऐड बोथ ऑफ देम, कितना प्रीमियम आ रहा है, 3,000, 35,000 into 20, 7 lakh, and 2,500 into 50 is 1,25,000, means कितना 8 lakh. Are you getting the same amount, 7 lakh plus 1,25,000, that is 8,25,000 is the amount on, is the amount of premium. So being PC discharged, being PC discharged, ये भी हो गया. इसके बाद जो डिबेंचर्स को जो हमने कैंसल किया, ओल्ड डिबेंचर्स वेर ऑफ 10%, न्यू डिबेंचर्स विल बी ऑफ 15%. सो ओल्ड को कैंसल करके let us issue new debentures, 10% कैंसल हो जाएगा लाइबिलिटी और बदले में 15% क्रिएट हो जाएगा. Let us prepare that entry cancellation का. So 15% cancel, 10% कैंसल होके 15% क्रिएट हो जाएगा. So let us pass that entry. 10% debenture 30,000. So debenture, that is 10% debentures, debentures liability है, so liability will be in the credit but cancel हो रहा है तो debit में लिखा, और बदले में we are issuing new debentures of 15%, so 15% debentures, 15% debentures account 30,000, being debenture holders settled, इसको बोलेंगे being debenture holders settled, being debenture holders settled. This one is also done. फिर क्वेश्चन में there is statutory reserve ना, statutory reserve होता है, तो
स्टैट्यूटरी रिजर्व को फिर से मेंटेन करना है, भले क्वेश्चन में नहीं बोला है, बट दे हैव गिवन स्टैट्यूटरी रिजर्व 1 लाख प्लस 75,000, 1 लाख इन जोश एंड 75,000 इन आशीष, इसको हमें अभी भी मेंटेन करना पड़ेगा. सो वी विल पास दैट एंट्री. सो नया एंट्री, नया रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व. अगर हम सेपरेटली क्रिएट करते ना दिस टेक ओवर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, अगर सेपरेटली जोश लिमिटेड एंड आशीष लिमिटेड का करते तो एक में गुडविल और एक में कैपिटल रिजर्व अगर आया तो हम लोग वो सेट ऑफ वाला एंट्री कर सकते हैं. मीन जो हायर अमाउंट होता है उसको रखेंगे, लोअर वाला अमाउंट को, लाइक सपोज गुडविल इज 30,000, कैपिटल रिजर्व इज 10,000. सो क्या करेंगे, कम वाला क्या है कैपिटल रिजर्व, उसको कैंसल करके गुडविल जितना बचता है उतना लेंगे. दैट एंट्री आई हैड एक्सप्लेन्ड यू, बट हमने कंबाइंड किया तो हम लोग वो वाला एंट्री नहीं आएगा. डायरेक्टली गुडविल इज दैट द नेट अमाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट हो रहा है 1 लाख प्लस 75,000. तो इधर रहेगा 1,75,000, 1,75,000 being statutory reserve created, being statutory reserve created, statutory reserve created. These entries are done. Now we come to the balance sheet. Journal entries हो गया. अभी finally we come to the balance sheet. तो बैलेंस शीट को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. वन इज नोन एज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. सो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कम्स शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, एंड शेयर होल्डर्स फंड में two things are there. Shareholder have their right on the share capital and the reserves of the company, reserves and surplus, reserves and surplus. So note में share capital will be note number 1, reserves will be note number 2. So सबसे पहले let us prepare the note for share capital. How many total number of shares are there? हमने already journal entry में find out किया 35,000 shares are there and preference share also is there. So हमें यहाँ पे separately दिखाना पड़ेगा equity share capital. There are both equity share and preference shares. So equity share capital is 35,000 equity shares of rupees 10 each. Of rupees 10 each, which will come to 3,50,000. Then we have 2,000. Then we will write 50 preference share capital. We also have preference shares. So preference share capital, we have how much? 2,500. Na 1,000 plus 1,500. So 2,500, 15% preference shares of rupees 100 each. Preference shares are of 100 rupees each. So this becomes 2,50,000. दोनों को add करो, you will get 6 lakhs as share capital. So we'll write here 6 lakhs. Now let us come to the next note, that is reserves and surplus. Reserves and surplus. Reserves and surplus में all the reserves which were there in the old company, that is Ashish Limited and Josh Limited, there was general reserve, profit and loss account, statutory reserve. कि हम लोग normally old company का जो reserves है old company के shareholders में divide होता है. अब new company जब
शिल्पा लिमिटेड ने टेक ओवर किया ये बिजनेस को, तो कोई रिजर्व यहाँ पे हमें गुडविल है, देयर इज नो कैपिटल रिजर्व, नेट हमें यहाँ पे गुडविल मिला है, अगर कैपिटल रिजर्व रहता तो वो लिखते। अभी हमारे पास कौन सा रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, बिकॉज स्टैट्यूटरी रिजर्व हैज टू बी मेंटेन्ड by the new company also, तो statutory reserve है, and we have amalgamation adjustment reserve. Normally reserves have credit balance, but this one is in the debit side, so इसको bracket में लिखेंगे. So what we will do here, we will go to notes to account, and यहाँ पे हम लिखेंगे पहला जो रिजर्व है securities premium. Securities premium, how much is the value of securities premium? Securities premium we have already calculated. It is 8,25,000. So we will write here securities premium is 8 lakh. Securities premium is 8,25,000. Then we have amalgamation adjustment reserve. Amalgamation adjustment reserve, which has a negative balance because ये debit side में है, मैंने आपको बताया है liabilities have a credit balance, but this amalgamation adjustment reserve is in the debit, so हम bracket में इसको बताएंगे. And then we have statutory reserve also. Statutory reserve भी है और उसका भी balance same है 1,75,000. See, you can check here in the journal entry. Statutory reserve also is 1,75,000. So we will write here 1,75,000 plus minus cancel हो जाएगा, and here we will get 8,50,000. So we will write here 8,50,000. ये भी मिल गया. Now we will go to the next one, capital B. Equity means shareholders fund. Liability means there are two type of liability, non-current liabilities and current liabilities. So non-current, as the name suggests, it's long-term liabilities. So इसमें हम लोग लिखेंगे long-term borrowings. Long-term borrowings. So long-term borrowings में हमारे पास क्या है? Debentures, bank loan क्या है हमारे पास? We have debentures. We have 15% debentures, 30,000. रिजर्व्स का अमाउंट है 8,50,000. ये ऑलरेडी हो गया है, देखो 8,15,000, 8,25,000. आई एम वेरी सॉरी. तो 8,25,000, 8,25,000. थैंक यू. 8 लाख. तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. नाउ वी कम टू नॉन करंट लाइबिलिटी. उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है. इन दैट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वी हैव 15% डिबेंचर्स which is 30,000. We have 30,000. Then what we have? Then we have current liability, short-term liability, current as the name itself says, current liabilities. Current liabilities में trade payable. 1 minute. We have trade payable. Trade payables. We have this second entry of takeover of assets and liabilities. ये देखेंगे तो debentures है, creditors है, bills payable. Debenture long term borrowings है, non-current liability, then creditor and bills payable together we refer as trade payable. So trade payable है हमारे पास creditor 1,80,000 and bills payable 1,25,000. So what we will do here, let us go prepare note number 3. Note number 3 में हम बताएंगे trade payables. Trade payables. Trade payables. We have creditors and we have bills payable. दोनों का वैल्यू क्या है? दोनों का वैल्यू क्या है? लेट अस वंस अगेन सी क्या वैल्यू है. क्रेडिटर्स, we'll go to that second entry. We have already written the combined one, 1,80,000 and 1,25,000. So we will write here 1,80,000 and 1,25,000. 1,80,000 and 1,25,000.
thousand. So we are getting total as 3,05,000. 3,05,000. Right, 3,05,000. Let us write here 3,05,000. With this, liabilities are done. Now we will come to the assets. So second one, assets. Assets again two types. Capital A, non-current assets. Non-current assets में आता है हमारा प्रॉपर्टी, plant and equipment. Property, plant and equipment. So this is our fixed asset. कि दो types का होता है, tangible and intangible. So let us see how many tangible assets we have. Tangible assets हमारे पास take over of assets and liabilities का entry है. So we have 3 tangible assets. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर्स. अमाउंट ये है 6 लाख, 2 लाख 70 and 80,000. So let us write down, prepare one more note and we will show the tangible assets. So fourth one, tangible assets. So here fourth one, tangible assets. Tangible assets may we have plant and machinery, building and computers. And computers. Let us see their amount कितना है. Go to the second entry. Amount है उसका 6 lakh, 2 lakh 70 and 80,000. 6 lakh, 2 lakh 70, 6 lakh is building, 6 lakh, 2 lakh 70 is plant and machinery, 2 lakh 70,000, 2 lakh 70,000 and 80,000 and 80,000. So computers is 80,000, 2 lakh 70, 80,000. So total we get as 9 lakh 50,000, 9 lakh 50,000. So we will write here 9 lakh 50,000. Then intangible assets में we have goodwill. Intangible asset में we have goodwill. Goodwill का value is how much we get it. We got it in the second entry. It is 30,000. So we will write here. It is 30,000. So I will write it here 30,000. Then we will go to our next one, B, that is current assets. We will go to B, current assets. Current asset में we have inventories. Inventories. Then we have trade receivables. Trade receivables. Then we have our cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. So here what we will do, let us check. Stock we have 2 lakh 30, debtors we have 3 lakh and 1 lakh 10,000. So we will write here stock inventories. We have here inventories. We have here 2 lakh 30,000. Inventories we have 2 lakh 30,000. Trade receivables में we have two things. Debtor also is there and we have bills receivable also. 3 lakh, 1 lakh 10,000. So here we will write, go to fifth one, 3 lakh and 1 lakh 10,000. So fifth one, trade receivable. Trade receivables. Trade receivable, we have debtors and we have bills receivables. Debtors and bills receivable. Debtor is 3 lakhs. Debtor we have 3 lakhs and bill receivable we have bills receivable we have 1 lakh 10,000, 3 lakh 1 lakh 10,000. So we will write here 1 lakh 10,000. 1 lakh
10,000. So this will be 4,10,000. We will write here 4,10,000. So here let us write 4,10,000. And finally, cash and cash equivalent, we have 1,40,000. We have 1,40,000. 1,40,000. With this, we will come to the total, and let us see how much total we are getting, how much balance sheet total we are getting. We're getting 17,60,000. When we add all this, we get 17,60,000. So with this, our balance sheet is getting tallied and this sum is done. Thank you very much, everyone.